अरे भाई लोग। हेलो हेलो। So am I audible right now? सब सही है ना? Like is it audible or something? Is it audible to everyone? I hope it is audible because I'm not getting any messages. That's why. Um, एक मिनट, let me check. Hey, hi, welcome to live stream. Hi, welcome to live stream. Welcome to live stream. I hope I'm audible. Okay, you have written yes for that. I think so. Chalo, thank you for this. So let's start the live stream. I mean, live stream has started. I mean to say, let's start with the doubts and all. I think I'm visible as well. Let me check. Just a minute, guys. Yeah, it's visible. Everything is okay. Good to go. Let me keep it like this. Yeah. Okay. Nice. चलो ठीक है. Okay. Just a minute. Hey, hi Lucifer. Welcome to live stream. Welcome to live stream. Yash, first thing first, like you are asking a doubt related to some Python for that. The thing is, I have received the email, but what was the issue in that? Can you just ask, like, what was the issue in that? Can you just ask? Hey, hi, welcome to live stream. Welcome to live stream. Welcome to live stream. Hi, Mishraq. Welcome to live stream. Good evening. Oh, yeah. Hi. Okay. Congratulations for 2K. Thank you. Thank you. Yes. Thank you for this. Really, thank you. Thanks, Yash. Thank you for this. Really, thank you, bhai. Thanks and thanks everyone for reaching 2000 plus subs. That too, like we have started our live stream when like we have started, I think from April 2025, or I don't know when I have started properly. Like from April 2025 I have started my continuous what we say, continuous YouTube journey actually. ठीक है. I think from June I have started my live stream. I think so.
And just in how many, like 6 7 months, let's take 7 months, we have reached 200 2000 subscriber, I mean to say. So thanks to you all, thanks to you all, that you all believed in me. Thanks for that. Thanks for that. Okay, we have one query. I solved that problem, don't worry. Okay, thank you भाई, thank you. फिर भी कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो. Okay, we have one query from Mishra. Congratulations, sir. Yeah, welcome, bhai. Welcome, welcome. Sorry, welcome. And also, I have sent your mail. Like Kriti, I have sent your mail related to the CV, and I have received a acknowledgement mail as well. So, I hope you have done the correction part. Uh, Thanks. So I hope you have done the correction part, Kriti. And okay. So anybody have any more doubts in the live stream? किसी को कुछ भी doubts वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो. एक मिनट, let me check once सब सही चल रहा है कि. एक मिनट, let me check. Yes, sir. Thank you so much. Yeah, welcome, welcome. Thank you for that. And please do the changes. Like, please do the changes in your CV and resume and all. Already it was like on a good stage. No worries for that. Related to the other two projects, just take care of it. And apart from that, everything was good. No worries for it. And what's this? सही है, चलो. So let me check. I think everything is okay here. कि- Let me check the live stream ka, what we say, health, because I don't know when it gets switched off automatically. Just a minute. Let me see. Everything is okay. No worries for this. Okay, then should we start with today's question answer session? ठीक है. Let's start with those. And in that meantime, anybody have any doubts in the live stream, just ask your doubts and you can just practice side by side. ठीक है. Oops, sorry for this. चलो, let's start with today's question answer session. Let's see what we have for today. I think we have completed assignment number 8. I think so. Right. I think we have completed. नहीं नहीं, लास्ट क्वेश्चन वाज देयर, मतलब लास्ट क्वेश्चन बचा था जिसमें हम लोग ईयरली सेल्स रिलेटेड जो सेल्स डेटा है इन 2024, वी नीड टू फाइंड दैट. आई थिंक ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ था. ये क्वेश्चन आज हम लोग कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं. राइट, लेट्स कंप्लीट दैट थिंग. एंड इन दैट मीन वाइल आप लोग को कोई डाउट्स वगैरह या कुछ रिलेटेड टू क्वेरीज
you can ask in my live stream or baki. Just a minute. Let me give you the mail ID for everyone. You can just mail your doubts here as well. Okay? No worries for it. Let me just. So just ask your doubts. Anybody have any doubts in the live stream? In that meantime, let me just write a post related to the live stream in my YouTube post section. And I hope you all are applying to the job post that I have actually posted in my YouTube post. Please apply to that, because that is for the especially for freshers. Okay, especially for freshers, and that is from LinkedIn. I mean to say, my friends, I have told my friends to send, I mean, DM me any of the job post which they see in LinkedIn platform. So thanks to them, literally thanks to them, related to freshers job post. So whenever I get any of the messages or DMs from my friends related to the job post, I just post it in my this YouTube channel, also in my Telegram group, right? So please do apply in that as soon as possible. है कि नहीं? Please do apply in that as well. So that's the thing. Okay, let's start with today's I mean question answer session, and let's start with the starting phase. So we have to write a query to print top three product in each category by year over year sales growth in 2024. Year over year sales growth, ठीक है? Whenever you get like this question, like year over year sales growth in year 2024, when you get like this kind of question, or you get like this kind of question sometimes, like the previous one, get month over month sales growth in like this, that means you have to take care of month and year at the same time, right? Like this kind of scenario also you can get. So mostly in this scenarios you will be doing comparison, you will be using comparison logic and techniques, right? You will be using these two techniques. And whenever you are using this comparison techniques, most of the time you will be using this logic. ठीक है? Lead and lag, most of the time, I mean to say 90% of the time you will be using this. ठीक है? 90% of the time. Also in my new project, I mean in my new Spotify project, you will also see this kind of Windows function, percent rank, which is also known as percentile feature, as a Windows function in my February project. So from 1st Feb you will get the project in my YouTube channel, right? Please do watch that. And it is a kind of real life scenario kind of project. So whoever uses Spotify, not only Spotify, in today's scenario you see in Spotify, also in YouTube, whoever uses Apple Music, each and every platform nowadays, like earlier Spotify and YouTube used to do, and right now each and every platform, they are showing you the full year recap, right? Full year recap in a single small video, or kind of
शॉर्ट्स काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, स्मॉल वीडियो अटैच टू अ वीडियो, ठीक है. सो if you have used Spotify or any of the platform, music related or video related platform, you would be familiar with that. Even though no doubt all of you might be using YouTube, you might have also seen this YouTube recap in your mobile phones, ठीक है. Mostly these are played, I mean this videos are made through your own data, right? Through your data. Own data means full yearly data, and that data consists of this series from January to December series, ठीक है. It is not like financial year वाला series, no, it is from January to December. I mean to say right now also from January 2026 till December 2026, whatever you will do, whatever activity you do in any of the social media, and even though any of the music or video related platforms, you will be able to see like this kind of things, ठीक है. You will be able to see like this kind of things. So all these things are having a data background, let me tell you, ठीक है. Why this data background? Because they take care of your time spent in app, ठीक है. Also they take care of your time spent in specific condition. Like specific conditions means, let me explain this. Specific conditions means like what you are watching, like you watching podcast, suppose 200 minutes, right? So it is like data, obviously you are watching music videos, suppose 400 minutes example, or you are watching like mostly lofi music, example I'm saying. So it's like 400 minutes, ठीक है, example I'm saying, like this kind of way, ठीक. So like this kind of scenarios are consisting of numeric values, mostly they are numeric values, ठीक है, because they are mostly into time spent, right? Time spent is what, how many minutes you have spent, and what you have seen. So minutes, if you see, mostly it is easy, minutes are converted to days, or minutes are converted to hours per days, like that, ठीक है. If you check out Spotify also, they also go with some data, like in today's scenario, in this Spotify wala series, I mean to say, in December 2025 they have given a new thing, that is your listening age, that is your listening age. And what it sees, like whatever songs you have listened, suppose you have listened a song from 2024, 2003, 2002, 2025, they take out the average, they take out your age, and also check out like what's the average and difference of that. I mean to say, suppose you are listening songs from 2023 to 2025, your listening age will be less, like 12, 13, or 20, like that. If you are listening to old songs मतलब जैसे कि suppose old lofi songs और गज़ल songs, ठीक है, like this, they will say your listening age is 65, 55, 70, it's like that, ठीक है. It's your listening age, not your real age, obviously not your real age. So these are like how these things are in the output, obviously, ठीक है. How these things comes in the output, correct. These things comes in the output with the help of data, simple help of data. And data related what means time. How these things come, like I told you now, how many minutes you spent,
in what domain or what specific things you spend most of the time. So they all calculate all the time taken in that way, and they have given you the output. Okay, that's the thing, nothing else. ठीक, that it is what all about, simple, right? And let me, so all these things are covered up in the video, and for members video it is like lots of things. For members I think it is 7 hour 23 minutes का video, full video. I hope you just get time. 7 hours 23 minutes का hybrid project. So please have some patience to watch this, because actually this is huge, let me tell you. ठीक है, this is huge actually. ठीक, hey hi others, welcome to live stream. Hi others, welcome to live stream. कैसे हो? Okay, we have one query. ओके वी हैव टू क्वेरीज. यार भाई कैलकुलेट फिल्टर और ऑल सिलेक्टेड समझा दो. ओके कोई बात नहीं, समझा देंगे एग्जांपल के साथ. भाई कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है इस बार? स्पॉटिफाई रैप्ट का प्रोजेक्ट आ रहा है. अगर आप स्पॉटिफाई, यूट्यूब या कोई भी ऐप यूज़ करते हो तो आपको पता होगा रिलेटेड टू रैप्ड. जो आप यूट्यूब भी अगर यूज़ करते हो तो देखना लास्ट में रैप्ट करके एक आता है. यूट्यूब में मतलब आपने साल भर में कितना टाइम स्पेंड किया, किस चीज़ में स्पेंड किया, उससे रिलेटेड. तो वही मैं प्रोजेक्ट निकाल रहा हूँ, और ये मतलब हाइब्रिड प्रोजेक्ट है. सीक्वल और पावर बीआई का मिला गया, आई मीन टू से, मतलब सीक्वल प्लस पावर बीआई. ठीक है, अभी जो प्रोजेक्ट आ रहा है इट इज रिलेटेड टू सीक्वल प्लस पावर बीआई. ठीक है, तो हाइब्रिड प्रोजेक्ट है और मेंबर्स के लिए 7 hours 23 minutes. तो थोड़ा पेशेंस रखना भाई, ठीक है, क्योंकि डेटा क्लीनिंग वगैरह भी. हाँ, क्या क्या इंक्लूडेड है वो बता देता हूँ. डेटा क्लीनिंग एज ऑब्वियसली रॉ डेटा क्लीनिंग इंक्लूडेड है. उसके बाद फिर बहुत कुछ नया चीज़, जैसे परसेंटाइल रैंक, ये वाला विंडोज़ फंक्शन के बारे में आप देखोगे. ठीक है, दूसरा चीज़ परसेंटाइल रैंक आप पावर बीआई में भी देखोगे. आप पावर बीआई तो ऑब्वियसली आप डाउट पूछ रहे हो, मतलब यू नो पावर बीआई सिंपल. आप पावर बीआई में ही देखोगे परसेंट रैंक कैसे यूज़ करते हैं. फिर बहुत कुछ नया नया चीज़ है, नया नया डैक्स है जो आप देखोगे इस प्रोजेक्ट में, बिकॉज इट इज़ लाइक 7 hours 23 minutes. तो बहुत कुछ है इसमें, बस इतना पेशेंस रखना, ठीक है, बिकॉज 1 Feb में आएगा, राइट. तो बहुत कुछ है, सो बी पेशेंस. ए हाय शिवा, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम. वेलकम टू लाइव स्ट्रीम शिवा. ओके, तो हाँ आपको क्या चाहिए था? ये फिल्टर और क्या था, सॉरी मैं भूल गया. फिल्टर और ऑल सिलेक्टेड. ठीक है, तो फिल्टर का क्या यूज़ रहता है, लेट मी टेल यू. फिल्टर का यूज़ क्या होता है कि इसमें जो भी आप डेटा देते हो वही डेटा को आउटपुट में शो करता है. आई मीन टू से एग्जांपल, जैसे कि आई मीन टू से एग्जांपल, वेट मैं लिख के यहाँ पे शो करता हूँ. ठीक है, लेट मी शो इट. ठीक, फिल्टर का, फिल्टर पावर भी है, मतलब जो भी कॉलम्स का आप नाम लिखे होगे इसमें, कॉलम्स का नेम जो भी लिखे होगे वही कॉलम को वो फिल्टर आउट करेगा और आउटपुट शोकेस करेगा. मतलब सपोज यहाँ पे 4 कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4. और डोंट वरी, हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे. जस्ट अ मिनट में साउंड सही है कि नहीं मैं वो चेक कर लेता हूँ. ठीक है, हाँ सपोज ये 4 कॉलम है एक टेबल में, और आपने क्या किया, आपने फिल्टर में लिखा कॉलम 1 और कॉलम 4. तो सिर्फ यही 2 कॉलम का डेटा यूज करके आपको
आउटपुट में शोकेस करेगा। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट। अब एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मतलब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, डेट का, सिटी। ठीक, एग्जांपल से समझोगे इजी रहेगा, इसलिए मैं बोला आइसक्रीम फ्लेवर। ठीक है, इसके बाद सेल्स डेटा। ठीक, ये चार चीज़ है। ठीक, सपोज मैं एक डेटा लेता हूँ, 1 जैन। एक काम करते हैं, थोड़ा लंबा डेटा लेते हैं ताकि समझने में इजी हो, क्योंकि हम लोग इसी डेटा का यूज़ करके हम लोग ऑल सिलेक्टेड भी देखेंगे। ठीक है, 1 जैन। आदर्श, आई होप यू आर देयर इन द लाइव स्ट्रीम। लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, फिर सिटी लेते हैं, कोई एक सिटी लेते हैं, सपोज दिल्ली, दिल्ली, मुंबई, और एक कोई सिटी। हाँ, दिल्ली मुंबई लेते हैं चलो, फिल्टर के लिए इजी रहेगा, आई मीन टू से, मतलब फिल्टर ऑल सिलेक्टेड के लिए इजी रहेगा, इसीलिए वेनिला लेते हैं। और कुछ एनीथिंग, ये यही दो लेते हैं, ज़्यादा उतना सोचते नहीं है। ठीक है, और सेल्स रखते हैं। सेल्स का कितना रखें, 100, 200। तो और किसी को कुछ डाउट, लेट मी, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा डेटा। ठीक, आई होप आदर्श आप हो लाइव स्ट्रीम में। तो ये रहा डेटा आपका। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा के थ्रू एक रिक्वायरमेंट क्रिएट करके फाइंड आउट करेंगे। सपोज मैं यहाँ फ़िल्टर यूज़ करूँगा और फिल्टर में एक रिक्वायरमेंट दूंगा। रिक्वायरमेंट क्या है कि सपोज मुझे सिर्फ चॉकलेट वाले आइसक्रीम का सेल्स चाहिए। ठीक है, सपोज मुझे सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम का सेल्स डेटा चाहिए आउटपुट में। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे, सिंपल सा बात है। आप क्या करोगे, यहाँ पे डेक्स का, आई मीन मेजर नेम दे दोगे। मेजर नेम क्या दोगे यहाँ पे, सपोज मैं मेजर नेम दे ही देता हूँ, सपोज चॉकलेट सेल्स। ठीक है, अब यहाँ क्या करोगे, आप कैलकुलेट, ऑब्वियसली यू विल यूज़ कैलकुलेट रो इंडेक्स को फिल्टर में करने के लिए। उसके बाद आप इधर सम फाइंड आउट करोगे सेल्स का, टेबल नेम सेल्स। ठीक है, इसके बाद आप यूज़ करोगे फिल्टर। ठीक, कैलकुलेट क्या करता है, रो को फिल्टर इंडेक्स में चेंज करता है। तो फिल्टर में आप क्या लिखोगे, सिंपल सा बात, जो सेल्स है उसको। ठीक, और उसके बाद आप फ्लेवर इक्वल टू आइसक्रीम लिखोगे, सिंपल। फ्लेवर इक्वल टू चॉकलेट्स। ठीक, क्योंकि आपको वही फिल्टर आउट करना है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, फ्लेवर क्या था कॉलम का नेम, आइसक्रीम फ्लेवर इक्वल टू चॉकलेट। ठीक है, तो इसमें अब क्या होगा, इस पे क्या होगा, मतलब पावर बीआई क्या करेगा, पहले सम फाइंड आउट, उसका तो काम है सम फाइंड आउट करना। वो क्या करेगा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जो टेबल है, टेबल का नाम है, आई मीन टेबल, सॉरी फॉर दैट, मैं ये सेल्स क्यों लिख रहा हूँ, सेल्स नहीं, मैं टेबल नेम लिखता हूँ। टेबल नेम आप लिखोगे, फिर फ्लेवर चॉकलेट। वो क्या करेगा, पावर बीआई जितने भी चॉकलेट वाले रोज हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, रो बाय रो जाएगा। ठीक है, रो बाय रो जाएगा, और जितने भी चॉकलेट वाले रोज हैं उसका सेल्स डेटा कैलकुलेट करेगा। ठीक है, उसका सेल्स डेटा कैलकुलेट करेगा। सेल्स डेटा कैलकुलेट मतलब 200 प्लस 250 प्लस 300, और हमने क्या दिया है वो है यहाँ पे चॉकलेट सम ऑफ सेल्स।
तो सम ऑफ सेल्स में चॉकलेट में क्या है, 200, क्या क्या था मैं देखता हूँ, 200, 250 और 300, ठीक है, 200, 250 और 300। तो आउटपुट में इतना शोकेस करेगा। वाई? क्योंकि ये तीनों जो सेल्स का डेटा है वो चॉकलेट के सेल्स का ही डेटा है, दैट्स इट। क्योंकि फिल्टर का काम क्या है, जो भी आप डेटा दिए होगे वही डेटा को कैलकुलेट करेगा, दैट्स इट। और बाकी डेटा वो टच भी नहीं करेगा, वो रो बाय रो जाएगा, ठीक है, रो बाय रो जाएगा। ठीक, क्यों क्यों रो बाय रो जाएगा? क्योंकि आपने कैलकुलेट यूज़ किया है, ठीक है, और कैलकुलेट का यूज़ किया है रो टू फिल्टर इंडेक्स चेंज। ठीक, वो चेंज कर मतलब वो फिल्टर आउट करेगा पहले चॉकलेट वाले रोज, उसका सेल्स डेटा लेगा और उसका सम करके आपको आउटपुट शोकेस करेगा, दैट्स द थिंग। ठीक है, अब ऑल सिलेक्टेड पे चलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा आदर्श, रिलेटेड टू फिल्टर। ठीक है, अगर आपको वो समझना है तो पूछ सकते हो, हम लोग अभी ऑल सिलेक्टेड में ही जाने वाले हैं, तो कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, राइट। राइट, तो आई होप, प्लीज़ आप रिप्लाई दो, क्या मतलब यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? आप नहीं आया तो पूछो, मैं फिर से करूँगा, ठीक है, राइट। लेट मी सी, अभी तक रिप्लाई नहीं आया किसी का, बट लेट मी चेक। Okay, we have one query from Shiva. Create table CD as select from HR error code. Create view. Command denied to user. How can we bypass this? Can you send the data, Shiva? Like, can you send a mail related to this? Like, I cannot understand about it. Like, if you can send, let me check my mail. Like, have you sent any mail or something? No, I haven't. Shiva, like, can you send a mail related to this? Like, what is the, this is the error that I am getting. Like, I can understand, like, this is a error. And this is the time, like, 1947:32. And I think you are using view here, obviously, because it is written create view command denied. So, if you can send me the table or like what is the issue created and all, I can help you out with that, right? Because what I believe is like it is something like some error message, right? But it is error like in what sense? If I
मतलब what I can believe is like create view is there, like SQL is not allowing create view because it is written like command is denied. But can you send the table or something so that I can understand why it is coming and all? ओके वी हैव वन मोर क्वेरी भाई, बट कैलकुलेट फिल्टर में क्या डिफरेंस है ये बताओ आप। देखो फिल्टर में क्या रहता है, अगर मैं नॉर्मल फिल जब पुराना एग्जांपल अगर आप चेक करो, अगर मैं नॉर्मल फिल्टर यूज़ करूँ वो सिर्फ आपको लिस्ट, मतलब जो भी डेटा है वो सिर्फ आपको आउटपुट में देगा, दैट्स इट। मैं कैलकुलेट इसलिए यूज़ किया हूँ ताकि उसका प्रॉपर यूज़ आपको समझ में आए, दैट्स इट। मतलब उसको जो एग्जांपल मैं बता रहा था उस एग्जांपल का एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आए इसीलिए। ठीक है, आप चाहो तो कैलकुलेट हटा सकते हो, मैंने कैलकुलेट यूज़ किया है सेल्स रिलेटेड। आप चाहे तो कैलकुलेट हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप नॉर्मल फिल्टर ही यूज़ कर सकते हो, फिल्टर टेबल नेम। ठीक है, इसके बाद कॉलम नेम जो भी, जैसे फ्लेवर हमने कॉलम नेम लिया है, और चॉकलेट। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा सिर्फ टेबल में जाएगा और जो भी, मतलब कॉलम नेम मतलब जैसे फ्लेवर कॉलम का नाम है, उसमें जो भी चॉकलेट रहेगा वही सिर्फ आउटपुट में शोकेस करेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, मैंने कैलकुलेट यूज़ किया जस्ट उसको, जो एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ उसको एक मीनिंग देने के लिए। ठीक है, दैट्स इट, उसको एक मीनिंग देने के लिए मैंने आउटपुट में कैलकुलेट, आई मीन डेक्स में कैलकुलेट यूज़ किया है। ठीक है, दैट्स द थिंग। आप चाहो तो कैलकुलेट नहीं भी यूज़ करोगे तो भी चलेगा, नॉर्मल फिल्टर यूज़ करोगे तो भी ठीक है। बट फिल्टर में क्या है, सिर्फ आपको आउटपुट शोकेस करेगा इन टेक्स्ट, मतलब जो भी रोज में, सपोज जैसे मैंने यहाँ यूज़ किया ना, फिल्टर में टेबल नेम कॉलम नेम इक्वल टू चॉकलेट, तो जो भी चॉकलेट वाले रोज हैं जहाँ पे चॉकलेट लिखा हुआ है वही बस आउटपुट शोकेस करेगा। ठीक है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, दैट्स द थिंग। ठीक, दैट्स इट। आई होप यू गॉट इट। कि उसके और कुछ समझना है तो पूछो फिल्टर रिलेटेड, मैं समझा सकता हूँ, उसके बाद फिर हम ऑल सिलेक्टेड में चलेंगे। ठीक है, राइट। राइट, यहाँ तक कुछ अगर डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, उसके बाद मैं ऑल ऑल सिलेक्टेड में जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि क्या है कि ओके वी हैव वन मोर, आप ऑल सिलेक्टेड ही समझाओ, ये सर के ऊपर से जा रहा है, बाद में देखूँ इसमें। देखो कैलकुलेट, अच्छा ठीक है आप कैलकुलेट छोड़ो अभी। कैलकुलेट का काम क्या है वो मैं बता देता हूँ। कैलकुलेट का काम क्या है, रो को फिल्टर इंडेक्स में चेंज करता है, बट ओके ठीक है, लेट्स नॉट गो दैट मच। फिल्टर का काम क्या रहता है, सिंपल रूल, फिल्टर का काम क्या रहता है, जो भी डेटा आप लिखते हो डेक्स में वही डेटा आपको शोकेस करेगा, दैट्स इट, वही डेटा आपको शोकेस करेगा, दैट्स द थिंग, सिंपल इतना ही समझो फिल्टर का। ठीक है, दूसरा ऑल सिलेक्टेड में चलते हैं। ऑल सिलेक्टेड का काम क्या रहता है, जो भी आप
स्लाइसर में देते हो, मतलब देखो ऑल सिलेक्टेड ज़्यादातर आपको विजुअल्स में स्लाइसर में ही काम आता है, ठीक है। मैक्सिमम जब आप स्लाइसर वाला विजुअल यूज़ करते हो पावर बीआई में तब, क्योंकि मैंने अपने करियर में ऑल सिलेक्टेड हमेशा स्लाइसर के साथ ही यूज़ किया। क्यों? क्योंकि ऑल सिलेक्टेड का काम क्या रहता है, जो भी आप फिल्टर दिए रहते हो, ठीक है, जो भी आप फिल्टर दिए रहते हो या फिर जो भी आप सिलेक्ट किए रहते हो डेटा, जो भी आप डेटा सिलेक्ट किए रहते हो, ठीक है, उसी को ही सिर्फ आउटपुट में शोकेस करता है। दैट्स द, अच्छा समझ गया, कैलकुलेट रो बाय रो जाके कैलकुलेट करेगा और फिल्टर में जो हम वैल्यू देंगे उसको शोकेस करेगा रिजल्ट में। राइट राइट, दैट इज द इजी एक्सप्लेनेशन में तो बोलूँ, इजी अंडरस्टैंडिंग। कैलकुलेट क्या करता है, सम निकालता है, सिंपल। हमने क्या किया, कैलकुलेट सम ऑफ सेल्स, ठीक, सिंपल। अब पावर बीआई तो कर दिया सम ऑफ सेल्स, ठीक है, पावर बीआई ने सम कर दिया। अब पावर बीआई को मैं बोल रहा हूँ आप सम ऑफ सेल्स तो करो लेकिन एक फिल्टर लगा के, तो ठीक है, पावर बीआई पूछेगा ठीक है कौन सा क्या फिल्टर लगाना है। मैं पावर बीआई को बोलूँगा कि फ्लेवर वाले कॉलम में जाओ और उसमें चॉकलेट का फिल्टर लगाओ, ठीक है। चॉकलेट का फिल्टर लगाने के बाद जो आप सम ऑफ सेल्स किए हो उसी का ही सेल्स का वैल्यू निकालो। मतलब हम लोग पावर बीआई को बोल रहे हैं आप पहले सम ऑफ सेल्स निकालो, वो निकाल के रख देगा। फिर जब आप फिल्टर में बोलोगे कि नहीं मुझे सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर का ही सेल्स चाहिए, तो बस वही है, दैट्स इट जो आपने बोला है। कैलकुलेट क्या आता है, रो बाय रो जाके कैलकुलेट करेगा सम को, जैसे कि हमने उसको बोला है, और फिल्टर क्या करता है, हमारा रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने बोला चॉकलेट का निकालो, दैट्स इट, खत्म, दैट्स इट। ओके, वी हैव वन मोर क्वेरी, कैलकुलेट सम ऑफ सेल्स। एक मिनट, आप थोड़ा इसको सही लिखो। जैसे हम लोग लिखेंगे ना कैलकुलेट, कैलकुलेट किस टाइप से लिखेंगे, सम ऑफ सेल्स, लेकिन उसके अंदर जो है आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। लेट मी शो यू दैट। पहले आपको ब्रैकेट का थोड़ा देखना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कैलकुलेट आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे लिखोगे सम, जैसे आपने लिखा है सम, उसके बाद टेबल नेम, जो भी टेबल नेम है वो तो ऑटोमेटिक आ जाता है, फिर कॉलम नेम, सपोज कॉलम नेम है सेल्स, ठीक है। ये हो गया कैलकुलेट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट का, ठीक। यहाँ पे मैंने दिया कॉमा। अब आपने क्या दिया, फिल्टर, ठीक, ये ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ है, ये ब्रैकेट ओपन है अभी भी, ठीक है। फिल्टर, मैं क्या बोलूँगा, टेबल नेम, फिल्टर में क्या आता है, पहले टेबल नेम लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद बोलना पड़ता है कि कौन सा कॉलम में फिल्टर लगाना है और क्या लगाना है फिल्टर। कैसे करोगे आप, इस तरीके से, टेबल नेम फ्लेवर इक्वल टू चॉकलेट, दैट्स इट। और यहाँ पे आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ये तो इसका ब्रैकेट है और ये फाइनल ब्रैकेट। तो ये जो ब्रैकेट है इसको मैं कलर कर देता हूँ, ये इसका फाइनल ब्रैकेट ऐसा है, ठीक। आपने क्या किया, सिंपल कैलकुलेट में पहले सम निकाला, ठीक है, और सम के अंदर आपने एक फ़िल्टर अप्लाई किया। आपने बोला कि भाई टेबल नेम में जाओ, ये टेबल नेम है जो भी टेबल, उस टेबल नेम में जाओ और उसमें जो भी कॉलम का नाम है उसमें चॉकलेट सर्च करो और उसका सेल्स निकाल के दो, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स द थिंग, सिंपल, और कुछ नहीं। अच्छा, आपने प्रोडक्ट इक्वल टू लैपटॉप दिया क्या, ओके, एक मिनट मैं वही लिख देता हूँ, प्रोडक्ट इक्वल टू लैपटॉप, ईजी रहेगा समझने में, ठीक है। दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग, राइट। सम टेबल नेम, क्योंकि आप जब कॉलम नेम लिखोगे ऑटोमेटिकली टेबल नेम आ जाता है पावर बीआई में, उतना टेबल नेम अलग से लिखना नहीं पड़ता।
हाँ, लेकिन जब आप फिल्टर लिखोगे तब आपको टेबल नेम अलग से लिखना पड़ेगा, अगर एक से ज़्यादा टेबल है तो। फिर उसके बाद आप कॉलम नेम लिखोगे तो ऑटोमेटिकली टेबल नेम आ जाता है, एवरीबॉडी नोज दैट। और ये आपको फिल्टर अलग से देना पड़ेगा कि लैपटॉप है, दैट्स इट। ठीक है, यही है, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, सिंपल, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे क्या सिनेरियो है। ओके, एग्जीक्यूट कैसे होगा समझाओ, सिंपल, देखो सिंपल सा बात है। एग्जीक्यूट कैसे होगा बता रहा हूँ, एक टेबल है, जो भी टेबल नेम है, ठीक। हाँ, जस्ट अ मिनट। टेबल में क्या होगा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टेबल में क्या होगा, एक मिनट। और मतलब फर्स्ट एग्जीक्यूट कौन सा होगा, देन कौन सा, इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन आई थिंक ये मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, बट जितना मुझे लग रहा है पहले फिल्टर होगा, ठीक है। पहले इसमें क्या होगा, लैपटॉप फिल्टर होगा, मतलब जहाँ पे भी लैपटॉप है, जैसे यहाँ पे लैपटॉप 100, माउस 50, कीबोर्ड 200, लैपटॉप 150, ठीक है। पहले क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, इसका क्या है मेरे को याद नहीं है, आई थिंक पहले फिल्टर ही होगा, मैं एक बार चेक करके बताऊंगा। पहले क्या होता है, ये फिल्टर करता है रो बाय रो, जाता है कि कौन सा लैपटॉप है, ठीक है। डेटा चेक करता है लैपटॉप कौन सा है, ठीक है। फिर लैपटॉप को बैकएंड में निकालता है, ठीक है, इस तरीके से। लैपटॉप 100, लैपटॉप 150, ठीक है, ऐसे निकाला, राइट। ऐसे निकालने के बाद अब क्या होगा, देखिएगा, चलो लैपटॉप तो निकाल दिया मैंने, किसके मदद से, फिल्टर के मदद से। लेकिन अपने यूज़र ने और एक अपने को रिक्वायरमेंट दिया है, क्या रिक्वायरमेंट दिया है, सम ऑफ सेल्स, और ये अपने पास सेल्स का डेटा है। तो पावर बीआई क्या करेगा, चलो लैपटॉप तो हमने निकाल लिया, अब जो हमने सेल्स का डेटा दिया वो भी अब प्लस करेंगे, 100 प्लस 150, 250, दैट्स इट, ठीक है। इस तरीके से इतना सारा बंच ऑफ डेटा में से फिल्टर करेगा, रिक्वायरमेंट वाला डेटा जो भी आपने रिक्वायरमेंट दिया है उसको सम करेगा कैलकुलेट में, दैट्स इट, खत्म, यही है। हे हाय परीक्षित, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। ओके, वी हैव वन मोर करी, हाँ सही बोल रहे हैं, लाइक ब्रदर, पहले फिल्टर होगा देन रो बाय रो जाके उसका सेल्स सम्स कर देगा शायद। हाँ, जितना मेरे को लग रहा है वो एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा, और भूल गया हूँ क्या है क्या नहीं है, वो एक बार चेक करना पड़ेगा, बट जितना मुझे आइडिया है इट इज़ लाइक फर्स्ट फिल्टर आउट होगा डेटा, इस तरीके से फिल्टर होके निकालेगा, फिर देखेगा कि अपने सम का दिया है आउट, मतलब रिक्वायरमेंट, वो सम कर देगा, जो भी डेटा फिल्टर है उसका सम कर देगा, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स द थिंग, राइट, नथिंग एल्स। अगर आप सम वाला चीज़ निकाल भी देते हो कैलकुलेट से तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैंने इसलिए दिया ताकि एक मीनिंगफुल एग्जांपल बन सके, दैट्स इट, ठीक, नथिंग एल्स, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है समझ में आ रहा है, बिकॉज आप खुद ही रिप्लाई दे रहे हो, मतलब आप अपने ही क्वेश्चंस का आप रिप्लाई दे रहे हो, दैट मीन्स आपको समझ में आ रहा है जितना मेरे को लग रहा है, सो दैट्स अ गुड थिंग। तो अब चलते हैं ऑल सिलेक्टेड में, राइट। शुड वी गो टू ऑल सिलेक्टेड, आदर्श आप एक बार यस नो लिख दो। आप लोग एक बार लाइक आदर्श आप एक बार यस या नो लिख दो, ताकि मेरे को समझ आए कि चलो हमें आगे बढ़ना है रिलेटेड टू दैट, राइट। ओके, लेट्स सी, हाँ कुछ मैसेज आया कि नहीं फिलहाल।
ओके वी आर ऑल सिलेक्टेड। बताओ, ये तो हो गया क्लियर भाई। एक बात है, आप में आपका समझा हुआ अच्छा समझ आता है, कुछ भी बोला। अरे थैंक्स भाई, थैंक यू भाई आदर्श, थैंक यू फॉर दैट। एक चीज़ अच्छा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, दैट्स अ ग्रेट थिंग, दैट्स अ गुड थिंग। थैंक यू फॉर दैट। चलो अब चलते हैं ऑल सिलेक्टेड में। ठीक है, ऑल सिलेक्टेड। ठीक है, मैक्सिमम टाइम मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ, जितना भी मैंने ऑल सिलेक्टेड जितने और भी यूज़ किया हुआ है, ऑल सिलेक्टेड हमेशा मैंने स्लाइसर पॉइंट ऑफ व्यू से ही यूज़ किया हुआ है। ठीक है, स्लाइसर पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल सिलेक्टेड का जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, मतलब एक्चुअल मतलब क्या है ऑल सिलेक्टेड का? मतलब जो भी सिलेक्ट किया हूँ, जो भी सिलेक्ट किया हूँ, यूज़र्स ने जो भी सिलेक्ट किया है, उसी पे ही आप अपना फंक्शंस या रिक्वायरमेंट अप्लाई करो और आउटपुट में शोकेस करो, दैट्स इट, सिंपल। क्योंकि मैंने ऐसे ही समझा था ऑल सिलेक्टेड के बारे में। ज़्यादातर आप यूज़र्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, फिल्टर में हमने क्या किया था, फिल्टर में हमने अपने से रिक्वायरमेंट दिया था पावर बीआई को, कि मेरे को फ्लेवर जो है आइसक्रीम का वो चॉकलेट ही चाहिए। ठीक है, वेनिला नहीं चाहिए, बटर स्कॉच नहीं चाहिए, ब्लूबेरी नथिंग। हमने एक लॉक कर दिया था फिल्टर। ठीक है, हमने एक फिल्टर लॉक कर दिया था जब हम फिल्टर के डैक्स को यूज़ कर रहे थे। ऑल सिलेक्टेड में क्या है, ऑल सिलेक्टेड में हम किसी चीज़ को लॉक नहीं कर रहे हैं, बस बात यह है। ठीक है, किसी चीज़ को हम लॉक नहीं कर रहे हैं ऑल सिलेक्टेड में, राइट, सिंपल। हम लोग उसको ओपन दिए हुए हैं, मतलब ओपन फ्री वर्ल्ड दिए हुए हैं। जो भी यूज़र सिलेक्ट करेगा, सपोज अब यूज़र का मन हुआ कि नहीं चॉकलेट नहीं, अब मुझे बटर स्कॉच का सेल्स देखना है, या तो मुझे ब्लूबेरी का सेल्स देखना है, तो वेनिला का देखना है, वही आउटपुट शोकेस करेगा। क्यों? क्योंकि पावर भी है क्या देखता है, ऑल सिलेक्टेड में तो उसने दे दिया सपोज सम का चीज़। ठीक है, सम या समथिंग लाइक दैट, सम ऑफ सेल्स सपोज। अब पावर भी देखेगा, ठीक है मैं तो सम ऑफ सेल्स कर दिया, अब मैं सिर्फ यूज़र का रिक्वायरमेंट देखूंगा कि यूज़र किस मतलब किस चीज़ को सिलेक्ट करता है, कि मैं उसी का ही सेल्स निकाल के दूँ। एग्जाम्पल अगर देखूँ बोलूँ तो एग्जाम्पल इसी आइसक्रीम सेल्स का ही देखते हैं और फ्लेवर्स का ही देखते हैं। ठीक है, ताकि आप इजीली कनेक्ट कर सको एग्जाम्पल को, आई मीन टू से। तो हम लोग एक सपोज सम ऑफ सेल्स ही निकालते हैं। ठीक है, इस पे मैं पहले क्या करूँगा, एक टोटल सेल्स का डैक्स क्रिएट करूँगा। टोटल सेल्स का डैक्स क्रिएट मतलब सम ऑफ सेल्स। ठीक है, ठीक, ये मैं एक डैक्स क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, सम ऑफ सेल्स, टोटल सेल्स का। अब इसी चीज़ को मैं यूज़ करूँगा एक आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए, सिंपल आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए। अब मैं क्या बोलूँगा पावर बीआई को कि आप क्या करो, आप डायरेक्टली मेरे को उसी चीज़ का सेल्स का डेटा दो, सम ऑफ सेल्स का डेटा, जो कि मैं सिलेक्ट करूँगा अपने साइड से, दैट्स इट, राइट। आई मीन टू से जो भी यूज़र सिलेक्ट करेगा, सिंपल सा बात है, करेक्ट। आई होप यू गेट इट। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके साथ, राइट। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल बोलूँगा कि सपोज कैलकुलेट, एक काम करते हैं कैलकुलेट ही यूज़ करते हैं। आपको तो कैलकुलेट अभी समझ में आ गया, तो कैलकुलेट ही यूज़ करते हैं। मैं क्या बोलूँगा, कैलकुलेट, कैलकुलेट सपोज या तो टोटल सेल्स ऐसे लिखो। टोटल सेल्स क्या है, यहाँ हमने एक ऑलरेडी डैक्स बनाया हुआ है। ठीक है, मैं बोलूँगा कैलकुलेट टोटल सेल्स, ये इस तरीके से आता है जो भी मेजर्स रहता है। फिर ऑल सिलेक्टेड, ये ऑल सिलेक्टेड का काम है। ऑल सिलेक्टेड टेबल नेम, इसमें मैं बोलूँगा जो भी फ्लेवर
यूज़र सिलेक्ट करता है उसी को ही आप टोटल सेल्स आउटपुट में निकाल के दो। ठीक है, मतलब क्या होता है, सिंपल इस चीज़ को देखते हैं। सपोज इस तरीके से, ठीक है, चॉकलेट 150, वेनिला सपोज 200, बटर स्कॉच सपोज 100, चॉकलेट सपोज 50। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ऑल सिलेक्टेड में हमने क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, कैलकुलेट टोटल सेल्स, फिर इसके बाद हम लोग देंगे ऑल सिलेक्टेड। ठीक है, ऑल सिलेक्टेड में हम लोग कहाँ गया, हाँ, हम लोग क्या देंगे, ऑल सिलेक्टेड में फ्लेवर्स का कॉलम। ठीक है, जस्ट अ मिनट, टेबल नेम में फ्लेवर्स का कॉलम। अब देखो, अब सीक्वल क्या करता है, सीक्वल देखता है, चलो मैं सम ऑफ सेल्स निकालने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, सीक्वल का यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेटर ऑन हो चुका है, कैलकुलेटर में सिर्फ सम ऑफ सेल्स रहेगा, सिंपल, सिर्फ सम ऑफ सेल्स रहेगा। ठीक है, बस। अब क्या रहता है, अब विजुअल में, मतलब हम लोग रियल लाइफ सिनेरियो में क्या करते हैं, विजुअल में एक स्लाइसर यहाँ लगा देते हैं, फिल्टर स्लाइसर फ्लेवर का। सपोज कि यूज़र क्या किया, चॉकलेट सिलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया और चॉकलेट सिलेक्ट किया। पावर बीआई क्या करेगा, तुरंत रो बाय रो जाएगा, देखेगा अच्छा चॉकलेट यहाँ पे, तो वो तुरंत प्लस कर देगा सेल्स डेटा और आउटपुट शोकेस करेगा। ठीक है, अब सपोज यूज़र ने क्या किया, यूज़र बोला अब ठीक है, अब मेरे को चाहिए वेनिला का आउटपुट। तो वेनिला क्या करेगा, सीक्वल, मतलब सॉरी पावर भी है, तुरंत जाएगा रो बाय रो चेक करेगा वेनिला कहाँ पे, देगा अच्छा एक ही वेनिला है, तो वेनिला का क्या करेगा, 200 देखेगा, एक ही है, तो 200 आउटपुट में शोकेस करेगा। ठीक है, अब फिर यूज़र बोलेगा कि यार ठीक है, मेरे को सिर्फ, आपको तो पता है स्लाइसर में अगर आप टाइल्स यूज़ करोगे, इफ़, इसका एक बेनिफिट बताता हूँ, स्लाइसर में अगर आप टाइल्स यूज़ करते हो तो टाइल्स में आपने क्या किया, वेनिला एंड बटर स्कॉच सिलेक्ट किया। ठीक है, वेनिला एंड बटर स्कॉच सिलेक्ट किया, तो सीक्वल क्या करेगा, सॉरी पावर बीआई रो बाय रो जाएगा और वेनिला और बटर स्कॉच का वो फिल्टर लगाएगा, क्योंकि आपने वेनिला एंड फिल्टर यूज़ किया है, राइट। 200 प्लस 100 आउटपुट शोकेस कर देगा 300। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट, राइट, दैट्स द थिंग, राइट। इससे कुछ एडिशनल डाउट अगर आपको पूछना हो, इसका एक बेनिफिट वही है, फिल्टर का क्या है, एक लॉकिंग पीरियड रहता है फिल्टर का, फिल्टर का क्या है, एक लॉक रहता है फिल्टर का, कि मुझे यही फिल्टर चाहिए, यही कॉलम में यही वाला। ऑल सिलेक्टेड में क्या है, जो भी आप कॉलम नेम दोगे उस कॉलम में जो भी आप डेटा सिलेक्ट करो उसी को फिल्टर आउट करके वो शोकेस करेगा डेटा, दैट्स इट। ठीक, दैट्स द थिंग, राइट। ओके, वी हैव वन मोर क्वेरी। तो भाई अगर दूसरा फिल्टर है जैसे रीजन का एक और फिल्टर, तो इसको फिल्टर करेगा जब नहीं, जो भी आप फिल्टर लिखे होगे, जो भी आप कॉलम में लिखे होगे, मतलब कि ऑल सिलेक्टेड में जो आप लिखे होगे भाई शोकेस करेगा, दैट्स इट, राइट। ऑल सिलेक्टेड में जो भी आप दिए होगे, दैट्स द थिंग, राइट। मैं लिख देता हूँ, ऑल सिलेक्टेड में जो कॉलम दिए हो, ऑल सिलेक्टेड में जो कॉलम दिए होंगे उसी कॉलम का ही वो फिल्टर आउट करेगा सॉल्यूशन। ठीक है, राइट, दैट्स द थिंग।
दैट्स इट। और कुछ डाउट इससे ऑल सिलेक्टेड से रिलेटेड? ऑल सिलेक्टेड से रिलेटेड एक मिनट में चेक करता हूँ, इज एवरीथिंग ओके? स्ट्रीम इज हेल्दी। एक मिनट, लेट मी चेक। रिफ्रेश तो हो रहा है। ओके, वी हैव वन मोर। जैसे बाहर दो स्लाइसर है, एक फ्लेवर दूसरा रीजन का स्लाइसर तो होगा, हाँ हो सकता है, होगा, क्यों नहीं होगा। तो इसमें क्या रहेगा, सपोज सपोज आप क्या क्या डेटा था एक बार चेक कर लेते हो। हाँ, सपोज आपको दिल्ली और चॉकलेट का डेटा चाहिए तो भी आ जाएगा, दिल्ली में भी हो सकता है और चॉकलेट का भी डेटा चाहिए तो भी हो जाएगा। या तो आपको डेट चाहिए, सपोज 1 तारीख में आपको चाहिए चॉकलेट का डेटा सेल्स का, तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। मतलब बाहर अगर आप, जैसे ऑल सिलेक्टेड का काम, जैसे मैंने बोला, ऑल सिलेक्टेड का काम क्या है, जो भी यूज़र जो भी ऑप्शन देता है वही ही होगा, ठीक है। सपोज यूज़र के पास दो स्लाइसर है, जैसे आपने बोला दो स्लाइसर है, सपोज मैं देता हूँ एक डेट का स्लाइसर और एक फ्लेवर का स्लाइसर। सपोज डेट उसने सिलेक्ट किया 1 जनवरी और फ्लेवर सिलेक्ट किया चॉकलेट, तो देखेगा कि 1 जनवरी में कितने डेट है। फर्स्ट देखेगा कि 1 जनवरी में 4 रो है, ठीक है। अब उस 4 रो में से देखेगा कि चॉकलेट कितना है, सपोज ये वेनिला है, ये चॉकलेट है, ये बटर स्कॉच है और ये चॉकलेट है, ठीक है। अब 1 जनवरी तो उसने सिलेक्ट कर दिया फिल्टर, अब 1 जनवरी में देखेगा चॉकलेट कितना रो है, चॉकलेट 2 रो है, ठीक है। अब उस 2 रो में कितना सेल्स हुआ है वही आउटपुट में शोकेस करेगा, ठीक है। इट इज़ लाइक दैट, ठीक, इस तरीके से होता है। ऑल सिलेक्टेड का वही है, जो भी आप सिलेक्ट करते हो, मतलब यूज़र जो भी सिलेक्ट करता है उसका कोई लॉक इन पीरियड नहीं रहता, आई मीन तो से उसका कुछ लॉक इन कॉलम नहीं रहता है कि यही मेरे को चाहिए, नहीं, जो भी सिलेक्ट किया होगा यूज़र्स वही शोकेस करेगा, दैट्स द थिंग, राइट, दैट्स इट, है कि नहीं। या तो अगर आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, सपोज आप चाहो तो 3 फिल्टर भी लगा सकते हो। सपोज 1 जैन, 1 जैन में आप सपोज दिल्ली फिल्टर लगाए, ठीक है। अब दिल्ली में सपोज आपने चॉकलेट फिल्टर लगाया, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या करेगा, 1 जैन में को जाएगा और फिल्टर करेगा रोज, ठीक है। 1 जैन में पहले देखेगा दिल्ली कितने रोज में, 1 जैन में दिल्ली 2 ही रोज में। फिर देखेगा 1 जैन में दिल्ली में कौन सा फ्लेवर चॉकलेट है, आई मीन टू से स्लाइसर में अगर आप चॉकलेट सिलेक्ट किए होगे तो वो देखेगा, तो एक ही चॉकलेट है वही का आउटपुट शोकेस करेगा, ठीक है। सपोज फ्लेवर में आपने चॉकलेट और वेनिला चूज किए, तो क्या करेगा, 1 जैन दिल्ली,
फिर देखेगा दिल्ली में क्या क्या फ्लेवर है, चॉकलेट और वेनिला, चलो दोनों फ्लेवर है, दोनों का सम करेगा और आउटपुट में शोकेस करेगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। राइट। और इस तरीके से भी होगा सिंपल। मतलब ये मत सोचना कि मतलब ये मत सोचना कि ऑल सिलेक्टेड के अंदर मुझे डेट और रीजन का भी कॉलम नेम लिखना है, ये मत सोचना, ठीक है। आप अगर सिर्फ फ्लेवर ही लिखे होगे, क्योंकि सम क्या करेगा, ऑब्वियसली जो इंटीजर आई मीन जो नंबर फॉर्मेट में उसी का ही सम होगा, राइट। ठीक है। आप अगर ऑल सिलेक्ट में सोच रहे हो डेट और रीजन लिखोगे प्लस फ्लेवर लिखोगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपको ऑल सिलेक्टेड में फ्लेवर ही लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपने बाहर कैलकुलेट में सम ऑफ सेल्स दिया हुआ है, और सम ऑफ सेल्स मतलब सम किस में होगा, इंटीजर में ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, इंटीजर में ही होगा। जब फ्लेवर जाएगा इंटीजर चेक करेगा तो ही सम होगा, उसके बाद आप बाहर कुछ भी फिल्टर लगाओ, ओके गुड टू गो। ठीक है, इट इज़ गुड टू गो। ठीक। Okay, we have one query. Hey, I'm getting error while importing CSV file in PostGRE SQL and just need to insert the data. Yeah, it actually shows error, bhai. Let me tell you. The thing is कि sometimes what happen in any like CSV or Excel file, the file containing the data types are not properly done. ठीक है, file containing the data types are not properly done, that's why. Like if you are using my file, I have like whatever, I mean to say whatever files I have given from my project point of view, I have also given the create table query and insert into query for the same table, because I know I have faced the same scenario when I was in a learning stage. That's why when you go to company, that's admin issue and or that's data engineer issue. They take care of it. They take care of those bad data. But when I was learning, I also faced the same issue, and when I have searched in Stack Overflow, I have got the same answer everywhere. The thing is, the CSV or the Excel file, I mean the data inside that are not proper. I mean to say data inside that can be correct, but the data types are not proper. ठीक है, either data types are having issue, either sometimes what happen, like this, suppose the name is ABC, suppose here what will happen, here one quotation mark will come for some reason, due to which SQL do not accept this data, SQL do not accept this data. ठीक है, that is the reason, right? So if you are using my files, then you can check out, I have the create table and insert into for the same. ठीक है, I have the create table and insert into for the same. You can just copy that create table, insert into and execute it. You will get the output. But you are if you are like taking someone else CSV file, then it might create an issue, because due to data type error in that CSV or Excel file. ठीक है, that's the thing. Okay, we have one query from others. All clear, मैं अप्लाई करके देखता हूँ। या श्योर भाई, प्लीज़ डू अप्लाई एंड टेल कि सब सही है कि नहीं।
right? So anybody have any other doubt in the live stream, they can ask your doubts here. सो एनीबडी हैव एनी मोर डाउट्स हियर? एंड आदर्श, आप एक बार चेक करके देखो अपने पावर बी आई डैशबोर्ड में, ठीक है? एंड रिप्लाई कि क्या इश्यूज है, कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं, कि कुछ इशू शोकेस कर रहा है कि नहीं, वो आप बताना. Okay, we have one more query. Yes, the year and time are displayed differently and are not in format of year, month, and date. Issues will be there like that. Also, there might be other issue like if you check the text in the CSV file, you might see like that. Suppose like this, it might be showing. ठीक है, one normal quotation mark will be there. ठीक है. So sometimes what happen, this bad data, or you can say the data type issues, do not actually get synced with SQL. I mean to say CSV Excel file data type, sometimes what happen, it do not sync with the SQL engine, due to which it shows error in importing the data, right? This things happens, like this things happens only in learning stage. No need to worry about when you go to corporate or when you work for client. This things does not come into picture, so no need to worry about. It happens, it happens. So it is better to, either there are two ways, either take a good data like CSV or Excel data, or either anyhow bring the create table and insert into for the same. Bring the create table or insert into for it. ठीक है, it will work. Create table, insert into query, it will work. Anyhow, it will work. Or if some issue is there in create table and insert into, you can correct it properly. So no worries for that. You can easily correct it then and there. So anybody have any doubts in the live stream?
So anybody have any doubt in the live stream? You can ask your doubts. Ask your doubts, like anything you have, any doubts you have, anybody have, not only have anyone, right? Okay, can you explain CT and SQL and joins? Like, okay, do you want me to explain this CT and joins in same query? If you want me to explain this in same query, I can do that. Or do you want me to explain in a differently, means individually, like CT and joins individually? Or do you want me to explain CT and joins in a same query, right? You can just say in the live stream, like, should I explain that in a same query if you want? Okay, yeah, hi Avik, welcome to live stream. Hi Avik, welcome to live stream. We have two queries. One thing is like bothering me a long time, that data is in database, so you did some analysis using select query. Now how do you show them? Obviously it's the first base, select query is the first base, as they are temporary and read only operation. Yeah, this is what I'm saying, this is the first base, so that is only read only operations. We do two things, ठीक है? Two things are done, mostly we do insert into, ठीक है? We just insert the query. Suppose select query we have, example select example category, sum of sales from table group by category. Suppose example I'm saying, what we do, mostly what we do, we insert this
into the data pipeline, or you can say the data warehouse. ठीक है, simple, like it is better to say the data pipeline or data warehouse. ठीक है, for further use. ठीक, suppose sometimes what happen, we have to update the database so that our client would be able to see. Simple, what we do is like create view name, then the query. That's it, right? That also we do. Like it is like, you might be knowing about create view, right? It is just a kind of saved select query. ठीक है, I mean to say create view is what? It is a saved select query. Simple words, simple. This is we do as per requirement from client or from our stakeholder. Mostly it is like pushing the query into pipeline, pushing the query into data pipeline or data warehouse, whatever you're comfortable with, right? This is what mostly this clients also do. They put all those data, whatever data they receive, into their, like their data engineers, mostly not the client, they push it into the pipeline or they push it into the data warehouse, and we just extract it, find out the requirement and push it back to our warehouse. That's it, right? Okay, we have one more query. Parikshit, okay. Acha, like actually, Parikshit, I have asked you how you should, like, in what way should I make you understand, like, CT and joins in like separate way, or CT and joins combined in one query? Like, combined in one query. What do you want? You want combined in one query or just normal? If you want, okay, let's if you show it in SQL, that would be helpful. ठीक है, कोई बात नहीं. Let's take a question from the assignment. Just a minute. Just a minute. I'm just taking some question from here. No worries for that. It would be better to understand these things in SQL, right? Just like select everything from feedback table example. This is we have, ठीक है. This is we have in cashier table. ठीक. Right now you see, yeah, what you can do is like, suppose you want like to use joins. ठीक है. What we can see in this cashier table, what we have, cashier table we have cashier location, but in feedback table do we have cashier location? No, we don't have. What things we have? We have customer ID, employee ID, employee name, cashier ID, employee point, supervisor ID, and age. So what I want from the cashier ID, I want to paste the cashier location. Take what I will do, simple, I will write everything from feedback table A, join cashier table B on A dot cashier ID equal to B dot cashier ID. ठीक है, I am just joining it, and when I execute it, see what I have received. I have received the cashier location as well in this join. ठीक है,
Suppose let's take this, let's take employee id, let's take only the table employee, or take, let's take employee name, because id can get confused, that's why. Cashier id and कैशियर लोकेशन, ठीक है. सपोज एम्प्लॉय आईडी तो ए टेबल से ही मिल जाएगा, एम्प्लॉय नेम. कैशियर आईडी ए टेबल से ले लेते हैं. दिस वी टेक लाइक दिस, एंड व्हेन वी एग्जीक्यूटेड व्हाट वी हैव रिसीव्ड एम्प्लॉय नेम, कैशियर आईडी एंड कैशियर लोकेशन, ठीक है. राइट नाउ वी हैव सीन द यूज ऑफ जॉइन. व्हाट आई विल डू, आई विल यूज ct राइट नाउ, ठीक. With t1 as I am just making this a temporary table, and just let me check from t1. Let me check this, is it working? Yeah, it is working. Suppose I want to see how many employees are there as per cashier location, ठीक है. I will take cashier location count of employee name as number of employee from the CTE group by cashier location, ठीक है. And when I execute it, see what I have received. I have received cashier location and number of employee. So I hope you got it. Right now in the real scenario from the assignment only, from taking each and everything from the assignment, right? What I have done, I have used CT, also I have used the CT to find a output from the same, that's it. So in this what you can see, we have used CT and joins together, right? I hope you got it. Parikshit, I hope you got it, because you have told if you can show it in SQL that would be more helpful, and I have done it. So if you get this thing, I hope you got it, right? I have shown you the use of CT joins, and from this also we have found out the output. Simple, ठीक है. Right. Okay, we have one query from Abik. I am creating a project now. I am writing SQL query, say average sales or rolling sales. Now, how to put it in dashboard or presentation? Okay, no worries for that. Simple. If you can, like I am showing you this thing in SQL, what you have done, you have created a query. Suppose the same thing. Let me take this thing only. You have found out the cashier location and number of employee, ठीक है. Or let's take the category one, ठीक है. You took category and sum of sales, and you got the sum of sales, ठीक है. Simple as it is. Now you want to use this thing in any of the BI tools. Let's take Power BI, ठीक है. Any of the BI tools. What you will do, first thing first, obviously common sense, you will connect the database, ठीक है. You will connect the database, simple as it is, ठीक. Right now what you will do, after connecting the database, it is connected, but the main problem is you won't be able to see this category and sum of sales ka data that you have find out in SQL. So how to say it? Simple as it is. Create view, view name, suppose view category sum, ठीक है. And inside that, मतलब write the select query for category and sum of sales,
ठीक है, एंड इट विल show you in the output. ठीक है, simple as it is, right? Or you can do one thing, like you are using, there is second way also. Second way, just I got strike in my mind. Second way is like you can create a table. ठीक है, create table name as whatever requirement you have find out, suppose category and sum of sales requirement you have find out, you will create a table, ठीक है, in SQL. Then you refresh the data in Power BI, you get the table updated in your dashboard or your view kind of thing. I mean डैशबोर्ड ही बोलो बेटर है, डैशबोर्ड और पावर बीआई का जो सेटअप है उसमें ही मिल जाएगा आपको, सिंपल एज इट इज, राइट? सिंपल, you can do that, right? Okay, we have one more query. By the way, sir, in this period I work on multiple projects where SQL, Excel, then learn the basics of Python, pandas. That's the best thing, भाई, that's the best thing. Python में जो pandas है, मोस्ट ऑफ द वर्क, मोस्ट ऑफ द फिल्टर वाला वर्क, मोस्ट ऑफ द, हाँ वही फिल्टर वाला वर्क, मोस्ट ऑफ द डेटा रिलेटेड वर्क आर डन इन दिस लाइब्रेरी, ठीक है? दैट इज द थिंग. So take care of that, and that's a, I know you are taking care of that, but still. And also I hope you got it. Either you create a table for this or either you create a view, your wish, no worries for that. Because see, the thing is ki whatever query you write in this, matlab select query, you have told me already, like this is just for view purpose, nothing else, right? This is just for view purpose and मतलब temporary purpose, I mean to say, ठीक है? It is not saved or something. So to save it, better create a view or create a table and use it in any of the BI tool. That's it. That's the thing. Right? So anybody have any more doubts? Okay, we have one query from Parikshit. It's like method to delete duplicate okay, best question. Delete duplicates in SQL. First thing first, before jumping into this topic, let me tell you one thing. This duplicate deletion is always depending on the requirements, ठीक है? Always depend on the requirement can be anything, ठीक? Suppose like this, you get a data 101, 102, 103, 101, ठीक है? And you get a data like 1st Jan, 1st Jan, 1st Jan, 2nd Jan. For us, we would see कि 101 is in duplicate value, but if you see the dates, no, it is not in duplicate, ठीक है? So it depends on the requirement. If your client or stakeholder says कि delete the 101 directly from the customer ID column, then that's a different thing. If your client say कि delete suppose okay, let's take it in first only, ठीक है? If your client say कि delete everything which is matching like 101 and 1st Jan, if this filter, if this match, if this thing is matching, then delete it. This is a second kind of requirement. First requirement is only the customer ID ka requirement. Second requirement is related to customer ID plus date. So there are, first thing first, various requirements to delete the duplicate, ठीक है? Always depend on the requirement, ठीक है?
This is the theoretical part and this is the main thing, right? For us it might look duplicate, okay? For us it might look like this. Wait, let me write it again. 101, 102, 103. Oh, sorry. 101. Okay. Now see, let me write it. So till here what we can see, we can say कि हाँ चलो 101 and 1st Jan are duplicate data, we should delete it. But what if I tell you, the thing is like that? Right now say, is it duplicate? No, obviously not, because 101 has bought pen on 1st Jan, 101 has bought pencil on 1st Jan. So is it duplicate right now? No, it's not. So always ask for the requirement whenever you get into any recruitment drive or any interview. When they ask you to delete the delete anything, always ask like in what requirement you want to delete the duplicates. ठीक है, always first ask. If they say कि अच्छा we need to delete the requirement like only from suppose one column, ठीक है, except other column we don't care, we just want to delete from one column whatever duplicate data are there, that's a different scenario. If they ask you, okay, we want to delete duplicate like this with two columns, uh, customer id and date, this is a different requirement. If they ask you to delete with the category like customer id, date and category, that's a different requirement. Like this kind of requirements are there where you want to delete the duplicates. Okay, now let's jump into the practical part. Okay, that's the theoretical part. Let's jump into the practical part. How it is done? Simple, use row number. Okay, row number is what? Simple, related to series of number. It will give you like this kind of series. Okay, if you give suppose row number windows function and you give over partition by suppose employee id, what it will do, you know, suppose the data is like this, what it will do, it will first create a window for the employee id. It will go and write like this at the back end. Okay, after that it will give a numbering like 1 2 1 and 1. So whatever data is having duplicate, it will obviously having ranking more than 1. Okay, when you get this data, directly make a ct, then after that write a query, simple delete from the ct, like table 1, or you can say the ct where row number greater than 1. Why row number greater than 1? If something is repeated more than 1, it will give like this kind of numbering 1 2 like that. Like 102 and 3 are not repeated more than 1, so 1 1 is there, that's why. Okay, this is how SQL work behind the scenes. If there are like jumbled kind of employee IDs, it will first create a proper series, a proper window. It will then create a window like that. 101 का एक window, 102 का one window, 103 का window, then give numbering. So whatever data is repeated more than once, it will be like 1 2 3 like this. Positioning will be there or series of number will be there only in row number, right? Just delete this more than one kind of thing and it will get deleted, that's it, right? Okay, we have two queries. Thank you sir. Sir, pandas is life saving, drop duplicates. That's what I am saying, matlab python is the most easiest thing to use in data analytics. Right now we think like SQL is the easy thing, but once you started, like once you start using Python
for data analytics using libraries. ठीक है, no need to go to loops and all, even though no need to go to loops or like if else function and all. Without this also, if you just use the libraries, pandas libraries and the function inside those libraries, it is good to go. ठीक है, and that is the easiest tool than SQL. Let me tell you, easiest tool, like you told कि df drop duplicate, that's it, easiest tool, let me tell you that. ठीक, that's what I'm saying. Python is the easiest one. Earlier when I was learning SQL, I was like having a fear like yaar Python I have to read, I don't know Python loops are there, if else kind of iterators and all those function I have to create. I don't know how to create logic. But when I have studied this libraries, then I came to know already these functions are set up in those libraries. ठीक है, already the functions are there like drop duplicates. It is a kind of function like this function somebody had made. That's it. This function somebody had made in the backend and we are just using this function. That's it. Simple. It is already made and we are just using it. Simple as it is. Python is the easiest one. Trust me. Once you start using it, once you start understanding this tools, it is the easiest one by easiest one. Let me tell you. Okay, we have two queries from Shiva. In Power BI, how count ID each department and where HR? Okay, okay. You can usually like create the thing using calculate. Calculate you can use for sum, you can use for count, you can also use for count distinct or distinct count like that. ठीक है, you can easily use it. Okay, in Power BI, how count ID in department where HR? Simple, simple. Just create a measure, create a measure. ठीक है, or DAX whatever we say. Suppose you write like this HR na, HR count. Simple, write calculate. Calculate what it does, row to filter transition. ठीक है, in calculate what you will do, you will write count of employees. ठीक है, count of employees, simple, and you will write the expression as well where department equal to HR. Suppose table name department equal to HR. That's it, simple as it is, nothing else. ठीक है, simple as it is, right? That's it, you can do it easily. Right. Also, if you want to check out for the others question, others has use filter, right? You can use filter as well. Simple, what you can do, you can do calculate. ठीक है, calculate count of employee ID, then you can use filter, table name, then department equal to HR. This will also work, this will also work. ठीक है, simple as it is, simple. Use calculate. Calculate what calculate does, row to filter transition. That's it. ठीक, simple as it is, row to filter transition it does. ठीक है, ठीक. Okay, we have one query from Parikshit. Thank you. Yeah, welcome bhai, welcome. कुछ भी like if you have any other doubt, if you want to understand that thing again,
you can also ask me. ठीक है, I can help you out in that. Let me check. I think it's working. चलो ठीक है. Let me check like is my stream health is okay. चलो. Stream health is okay right now. And let's see anything we have to. Okay, we have one query from Shiva, and let's say you have deleted it. No worries for that. You can ask your doubts again. No worries for it. Shiva, you can ask your doubts again. I can help you out. So you can ask your doubt, Shiva. I can help you out related to this Power BI. You can ask your doubt, Shiva. No worries for it. So anybody have any more doubts here? Let me check. एक minute. Anybody have any more doubts in the live stream? Means use plus.
Okay, we have one query. Right now, I'm doing one project like HR data. I want to connect with SQL in Power BI. When I write query in SQL, displaces in Power BI card. Okay, okay, simple. This same question has been asked. I think you're getting very late comments in view. Right now, I have received like 917. I have received the message right now. It like fluctuate. Let me tell you, it fluctuates a lot. Sometimes I get in real time, sometimes it fluctuates. Okay, so that's the thing. But anyways, I'm getting your messages. So first thing first, I have told the same thing to Avik right now. ठीक, Avik has asked the same thing. Right now I am explaining it to you in real way scenario. Simple. Whatever you write in SQL, it is just a temporary basis point of view. Temporary basis point of view. First thing first, it is in temporary basis. ठीक है, simple. You have to push the data in Power BI using two ways. Like any of the one way you can do, any of the one way, there is no restriction in that. First way, you can create view. Second way, you can create table. ठीक है, example I am saying related to this. You have given the query like count of, what I will write like select, suppose क्या है, count of id department from table where department equal to HR. ठीक है, you have written this, you have got the output where in SQL. Simple, you have written this, you have got the output in SQL. ठीक है, right now you have two options, either you can create view, either you can create table. ठीक है, create view, then view name as this alias देके you can put this query to a proper view, or the same thing you can do is like create table, write the table name as the query. ठीक है, what you will do next what you will do, you will connect SQL with Power BI. How you will connect it? Directly go to import data, database, and you can connect it with the database and all. ठीक है, simple as it is. You will connect it. When you connect it, you select direct query. ठीक है, there will be two option, right? Import and direct query. There will be two option, import and direct query. Always choose direct query. ठीक है, for the project like I mean the recent project that I am going to like show to each and everyone in February, it is like related to import, because I have to show each and everyone related to the percentile work in Power BI. That's why I could have used direct query, but the thing is, if I would have used direct query, it won't like I won't be able to show you the क्या बोलते हैं percentile rank in Power BI. I just want to show you the percentile rank in Power BI. That's why I have used import in Feb project. ठीक है, Feb Spotify project. It is in SQL plus Power BI format. That's why. So, but what you will do? You will use direct query when you are, I mean, pushing the data in Power BI, right? Simple. After this, you will refresh it. ठीक है, when you refresh it, it refreshes the data. It will show the table name. ठीक है, suppose you are having three tables. Suppose like this, you see earlier you have table 1, table 2, table 3, and this is your new HR table, table 4. ठीक है, when you publish it, I mean when you import the data in Power BI,
this three tables will be there earlier, but this won't be there. Why? Because you are just writing the query, you are not creating table and just pushing the query inside that table. Right now when you have pushed the query inside a table, you will automatically see this HR table or view can also be seen, table can also be seen. So when you see the table, select it like you have selected the above three, select it, and that data, whatever data like count of id in HR data, will be created as a table in Power BI as well. Okay, simple as that. Okay, okay. Because in raw data I use count id, it show, but when I use count in Power BI, it shows 1000, shows 1000. uh, I think just check once, like is everything okay or not, because it should show you the same thing. Okay, it should show you the same thing, to be honest, because you are just anyhow copying the same or importing, I mean to say importing the same data to from SQL to Power BI. Okay, right, correct. That's the thing. Or can you tell me the DAX, what DAX you are using? Okay, because the thing is in DAX, like in Power BI, let me tell you what happens. In Power BI, first thing first, if there are two table and you are creating a relation, okay, that might create a issue and show you only 1000 rows instead of 2000 rows or 2200 rows. This can also be the issue. Also this thing, this count and distinct count, this can be the issue. Or like if you can give me the DAX, what DAX you have written, how many tables you have connected in model view, I can help you out in that. Okay, that's the thing, right? That is also the thing, I can help you out, right? Or simple, you can do one thing. When you import the data, just to check, I'm not saying it will give you the correct output. Just to check, I'm saying you can do this count rows, because we used to check in our real life scenario. That's why you can directly write count rows. Okay, and you can write count rows then employee id, or नहीं, count rows employees. ठीक है, simple. Then you do the id count, and you can check that, right, कि if the output is same or not. Why I am saying it will give you the distinct output. ठीक है, suppose there are errors like 1 2 3 1, and it is like a b c, and then a is there, like that duplicates would be also there. That's why I'm saying you can go and check that once. Okay, and if you can give me the DAX or something, I can help you out. Okay, because in Power BI checks first the relation, then they also see like count rows, you will get a data count distinct, all those things are there, right? And also this null values also, there is issue in Power BI. Okay, okay, we have okay, hi Akshit, welcome to live stream. Hi Akshit, welcome to live stream. But import mode becomes slow with large data set. Yeah, it happens, it happens, right?
Okay, we have one more query. Count ID equal to count CD project one. Acha, CD project one is the table name ID. Okay. Acha, tell me one more thing. One more thing. Tell me, is this table connected to any other table, or is that it is creating a relationship somewhere in model view? Is it creating some relationship in model view? Because if the thing is, example I am saying, suppose there are four data in one table and there are three data in another table, and it had created a relationship like that, one to many. So after creating a relationship, when you apply this DAX, you will get three output instead of four. ठीक है, you will get three output instead of four. Why? Because of this relationship creation. ठीक है, so have you created any relationship or something, right? If I can answer that, I can help you out. Just let me check, like, is everything okay? Okay, we have one more query. No. Okay, chalo, there is no relation. ठीक है, no worries for that. So there is no relation in model view. Second thing, do one thing, check, is like in Power BI, the count that you are doing related to the ID, is there any blank or null values? ठीक है, is there any blank or null values? ठीक, is there anything like that? Because in count it skips all the null values, right? But in Power BI it does not do the same. They also sometimes interpret or calculate the null and blank values. ठीक है, that's why I'm saying, is there something like that, right? And also check one thing, in table view also check one thing, कि जो ID you are calculating, it is in numeric form. Is it like that? Means it should be written like this in data type in Power BI, right? Check these things also. ठीक है, because if this is not in numeric view, output can show a issue in this. I mean, issue matlab output would not be matching, like in SQL 2200 and Power BI it is 1000, like that. ठीक है, check these two things. The ID is in this format. In table view you will be able to see, or also check this. Sorry, sigma would also be written here in this. ठीक है, at side of the DAX कहाँ गया, yeah, like ID would be there and this symbol would also be there. ठीक है, this shows like it is a numeric format, right? You can check that thing as well.
Okay, it is like I sent a mail. Let me check. Okay, I've received a mail and okay, in count distinct ID, count everything. Okay, 22214. This. Acha, in Power BI, it shows when I want to add data, it shows 1,000 rows. There is 1,000 ID because it's unique. Okay, that's why. I think it is showing the unique IDs. That's why I think so. Can you do one thing in table view? Can you go and check in table view in Power BI in table view? ठीक है. क्या बोलते हैं उसको? Wait. No. Wait. Power BI desktop and Power BI edit. क्या था? Just a minute. Power BI desktop and Power BI edit. क्या था वो? I just forgot the name in. Just a minute. You can go and check there. It will be helpful. एक मिनट. I just forgot क्या बोलते हैं उसको. Forgot the name. You just go and check. It will show you in this. इसको टेबल व्यू करके बोलते हैं. Go and check there. You can easily see in this table view. In this table view, see how many datas are unique and how many datas are repeated. Can you go and give me the screenshot of this? Right. I mean to say, select the table, go to transform data, go to transform data. Transform data will be in Power BI desktop. ठीक है. In this, select the ID column. When you select the ID column, there will be something like that in view format. The last option, I just forgot the last option. You just select it. You will be able to see in graph how many unique are there, how many null are there, like that. Let me show you. Wait, let me show you this thing. Where is it? In my YouTube channel, it's there actually. Just a minute. Let me show you that. In the Power BI का जो, just a minute. Oh, Babu. Just a minute. Let me. Where is it?
Okay. Uh, what we have? I sent another mail right now. Please check. Okay, let me check. Okay, I have received a screenshot for that. Correct. Limit of. Acha, this limit of 1,000 values. This one you are saying, yeah. This alert sign you are saying, yeah. 1,000 values. This one. Are you saying this? It will show till 1,000 only. I think it is like that. You can check one thing. Go to view. In that thing, go to view. In that thing, in the same thing only. Okay, in the same thing, go to view and check that. Acha, first thing first, the ID is the ID that I told you. It is in numeric format, right? The ID that I am seeing, like ID first name, last name, the ID is it in numeric format, kya? Or it is in 1, 2, 3 format, because I can see it is in ABC format. ठीक है, ड्यू टू विच दिस काउंट इज नॉट वर्किंग. ठीक है, that can be also the issue. ठीक, that can be also the issue. ठीक है, apart from that, related to this 1,000 rows in Power BI does not show you all the thing. It will only show you 1,000 rows due to limitations. Just to check that thing I am saying, go to view. In that only, go to view, click on the last option. Click on the last option. I just forgot the name for that. Click on the last option. In that thing, click on ID. After doing this thing, click on ID and you will be able to see how many distinct are there, how many null values are there, how many error values are there. Each and everything you can see. Okay, each and everything you can see. And let me just go and check out my project. In my project I can show you like how these things are there. Just a minute, let me show you my project. In that thing I can tell you easily. Right now let me show you this. Huh. See, in this, do one thing. If you can check out my YouTube page, I mean live stream wala page. If you can check this out, in this, go one thing, go to view and select on column profile. ठीक है, go to view and select on column profile and see how many data it is showing, how many counts it is showing, how many error, empty, distinct, how many things it is showing. Just tell me that, because it will show you all the data here. ठीक है, that's what I'm saying. ठीक, just go like wherever you are, like it is in what we say, what we say this, I just forgot it again. What we say, transform data part. It is in transform data part that you have shown me in the screenshot. Go to transform data part, select view, go to column profile, the last one, select it, unselect everything, go to column profile and then select the ID. Okay, whatever data you will get, just give me the screenshot, like if it is okay or not, because in that you will get all the data properly, right? In this thing, correct? Do it once, right? By that meantime, let me just come in 5 minutes.
So, can you check this? Shiva, I'm back in the live stream by the way. Can you check this out? By we meet tomorrow. No, you can check this out. Like you can just check it out. You go to view column profile, then you see this if it is visible or not. Okay? Check once, right? Just check one and check once and say how many data it is showing here. Whatever screenshot you have sent in that profile only, just go to view and then column profile and then select the ID. Okay? Do it once. Right? Check that and just reply it. Reply once. Like you can go to the view, then column profile, then select on ID, and you will get the output. Like Shiva, can you go and check that out related to this?
But still, anybody have any doubts here? Or like anybody have any doubts in the live stream, they can ask your doubts. Like anybody have any doubts in the live stream? Anybody have any doubts in the live stream, they can ask your doubts here. Okay, so anybody have any doubts in the live stream, they can ask your doubts. Like any doubts anybody have? Hey, hi Solo Reflex, welcome to live stream. वेलकम टू लाइव स्ट्रीम, हाउ आर यू? बहुत दिन बाद आए आप, कैसे हो? ओके, सोलो रिफ्लेक्स, हाउ आर यू सर? आई एम गुड भाई, आई एम गुड, आप कैसे हो? आई एम गुड, आई एम गुड भाई, आप कैसे हो? ओके, वी हैव वन क्वेरी फ्रॉम विजन भैया, डेटा क्लीनिंग। ए हाय विजन, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम।
डेटा क्लीनिंग के लिए numpy pandas रिसोर्सेस रिसोर्सेस मतलब रिलेटेड टू दिस रिसोर्सेस है, कुछ कुछ बता रहा हूँ। ये एक है फ्री कोड कैंप। मतलब यूट्यूब में ही है इन लोग का यूट्यूब चैनल फ्री कोड कैंप। इसमें आपको दिखा देगा पूरा, मतलब अच्छा ही पढ़ाते हैं लोग। मतलब जैसे कि ड्रॉप डुप्लीकेट्स वगैरह ये सब अच्छे से समझाया। मैं एक बार चेक कर रहा था। मतलब ड्रॉप डुप्लीकेट्स मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ आपका डेटा क्लीनिंग से रिलेटेड। ये सब अच्छा बता देगा ये लोग रिसोर्सेज में। मतलब और वो लोग ज़्यादातर पैंडास, मतलब आई मीन टू से pandas is mostly into this filtering part and cleaning part in python, ठीक है ना। ठीक है, pandas से ही सब होता है, तो उसमें ये सब आपको मिल जाएगा। ये जो रिसोर्स है easily you will get all those things to learn, ठीक है। ओके वी हैव वन मोर क्वेरी, आई एम फाइन विथ यू, चलो सही है भाई। ओके वी हैव वन मोर क्वेरी एंड इज दैट एनफ फॉर क्लीनिंग और नॉट, दैट इज यही है। लेट मी टेल यू दिस, pandas library is what used for data cleaning mostly, ठीक है। that is this is what it is used for data cleaning mostly, ठीक है। mostly used, right, mostly used। हाँ कभी कभार क्या रहता है, आप अगर नमपाई में जाओगे, नमपाई में ये सब फाइंड आउट करने के लिए, जैसे एस एन ए, ठीक है, फिर उसके बाद दिस काइंड ऑफ थिंग, ओ सॉरी एन पी मतलब नमपाई वाला, ये सब चीज़ में कभी कभार काम आता है। बट मोस्टली 90% ऑफ द थिंग इज इन pandas लाइब्रेरी, ठीक है। 90% ऑफ द थिंग इज इन pandas लाइब्रेरी, 10% इज इन numpy लाइब्रेरी, ठीक है। 90% ऑफ द टाइम, इवन तो आप कॉर्पोरेट या तो कहीं पे भी रियल लाइफ सिनेरियो मेरा बोलने का मतलब जाओगे, pandas ही ज़्यादातर आप यूज़ करोगे, राइट, ज़्यादातर, ठीक है कि नहीं। तो दैट इज़ ओके एंड गुड टू गो। ओके वी हैव वन मोर क्वेरी, पोस्ट जेआरई सीक्वल पीसी में डेटाबेस बनाने से वो डिप्लॉय हो जाए, नहीं नहीं वो डिप्लॉय नहीं होता, वो लोकली आपके उसमें रहता है, राइट। मतलब लोकल, लोकल मतलब कि आपके जो कंप्यूटर या तो डेस्कटॉप, आई मीन टू से उसी पे ही रहता है, दैट्स इट। दैट इज इन लोकल बेस, ऐसा नहीं है कि डेटाबेस यू आर क्रिएटिंग और समथिंग लाइक दैट। वंस यू आर क्रिएटिंग आपके सिस्टम में ही रहेगा, दैट्स इट, राइट, दैट्स द थिंग। आप अगर पूछो कि नहीं इंटरनेट पे कोई, नो वन विल बी एबल टू चेक योर डेटा, लेट मी टेल यू वन थिंग, सो इट इज़ लोकली मेड एंड डिप्लॉयड, दैट्स इट, दैट्स इट, है कि नहीं। अगर हाँ लोकली तो हो, हाँ लोकली रहता है यार, लोकली रहता है, दैट्स इट। वो अगर आप किसी के लिए काम वगैरह, आई मीन देखो कॉर्पोरेट वगैरह में क्या रहता है इन लोग का, जो लोकल डेटाबेस सर्वर रहता है, डेटा सर्वर्स रहते हैं उनके डेटा लोकेशन में, वहाँ से तो सब देख सकते हैं उनका अलग। आपका क्या रहता है, देखो सिंपल सा बात है, कंपनी वगैरह में आपके मशीन में इट डोंट गेट लोड, बाकी है तो डेटा अपने का जहाँ डेटा लोकेशन रहता है, जहाँ पे डेटा बेसिस रहते हैं वहाँ होते हैं, सिंपल सिंपल सा पॉइंट, वहाँ से सब एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न मोस्ट ऑफ अस यूज वीपीएन एंड ऑल दो स्टफ्स, दैट्स इट, ठीक है। I have completed learning Tableau with project. What next step should I take to get real life data experience in freelancing? Freelancing के लिए just start searching for client with whatever skills you have,
just start searching for clients, that's it. और बाकी just to make sure you have the what we say, make sure you have the practice set kind of thing. Like if you have any practice set, practice it on a daily basis so that you do not forget all the logic concept and formulas and all. ठीक है, right? This is what I would recommend you to, because once you like don't practice on a daily basis kind of thing, you will start forgetting all those things, whatever things you have learned. That is the thing. ठीक है, so practice on a daily basis and side by side start searching for client. That's it. Start searching for client and practice on a daily basis. That's the thing. Because anyhow client will take interviews or kind of practical exam, so just take care of it. Okay, ओके वी हैव टू क्वेरीज फ्रॉम सोलो रिफ्लेक्स। फिर वो डेटाबेस डिप्लॉय कैसे होगा, मीन्स मेरे ऐप का डेटाबेस पे बेस्ड है। डेटाबेस रिलेटेड मैं अगर बोलूँ तो एक क्या नाम था भूल गया, और मतलब वो अपने पता नहीं वो द थिंग इज कि मैं कॉलेज में जो कॉलेज आईडी था, अपना कॉलेज का जो आईडी था, जीमेल आईडी, कॉलेज वाला जीमेल आईडी, उसको हम लोग कनेक्ट करते थे एक उसमें सॉफ्टवेयर था, कौन सा भूल रहा हूँ, रेंडर ना कुछ था, एक बार चेक करो ये अभी चल रहा है कि नहीं, आई डोंट नो। एक्चुअली हमारे टीचर हम लोग को बोले थे कि इसमें कनेक्ट करने के लिए। आई डोंट नो इफ इट इज़ वर्किंग राइट नो और नॉट। ये है क्या वेबसाइट, एक बार चेक करो तो, रेंडर करके। ये क्या है, कॉलेज के साथ टाई अप था इनका। आई मीन टू से टाई अप मतलब जैसे क्या रहता है, हम लोग का कॉलेज के जितने भी मेल आईडीज थे फॉर प्रोजेक्ट पर्पज एंड ऑल, सारे स्टूडेंट्स के, आई मीन टू से सारे स्टूडेंट्स के इंक्लूडिंग टीचर एंड ऑल, वो ऑलरेडी इसका क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्रिप्शन पैक, कॉलेज जैसे नहीं रहता सब्सक्रिप्शन पैक लेके रखता है हर चीज़ का, उस तरीके से। तो हम लोग जब मेल आईडी देते थे इसमें, तो हम लोग को डेटाबेस मिलता था, मतलब डेटा स्पेस, डेटाबेस ये सब मिलता था, और वो फ्री था। फ्री मतलब कॉलेज से था ना, तो फ्री था। अभी अभी पता नहीं फ्री है कि नहीं, ये वेबसाइट है भी कि नहीं, चेक वंस। रेंडर करके था, और ये लोग क्या सब्सक्रिप्शन बेसिस रहता है कि क्या पता नहीं, बट कॉलेज ने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन लेके रखा हुआ था फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवन, फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड ऑल, मतलब लर्निंग, आई मीन टू से एजुकेशन पर्पस के लिए। ठीक है, फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए, चेक वंस। ठीक है, मुझे आइडिया नहीं अभी ऑन है कि नहीं, मतलब अभी ये वेबसाइट चल रहा है कि नहीं, है कि नहीं, दैट आई डोंट नो, बट चेक वंस। ठीक है, ये मैं अपने कॉलेज का बात कर रहा हूँ। कॉलेज मतलब बहुत पहले, लाइक 2016-17 का बात है। अभी ये है कि नहीं एक बार आप चेक करो। ठीक है, इस पर हम लोग एग्ज़ाम वगैरह रिलेटेड या तो कुछ असाइनमेंट्स वगैरह हम लोग काम करते थे ना, तो टीचर ऐसे ही अपडेट करता था और हम लोग उसमें काम करते हैं, मतलब उतना हैवी असाइनमेंट्स नहीं, इजी असाइनमेंट्स। ठीक है, तो ये एक बार चेक कर सकते हो। बाकी वेबसाइट्स का तो आइडिया नहीं है भाई, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। ए डब हम लोग जब अमेज़न में थे तब हम लोग AWS के सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते थे, जैसे ग्लू, RDS S3, ये सब। अब ये पता नहीं पेड है कि क्या है, जस्ट चेक वंस। ये अमेज़न टाइम्स में था। ठीक है, हाँ, बट स्कूल, स्कूल बोल रहा हूँ, सॉरी, कॉलेज टाइम में वी यूज टू यूज़ रेंडर। अब सही एक बार चेक करो, चेक करके बताना। ठीक है, ओके, वी हैव वन मोर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट टिप्स। प्रैक्टिस सेट रिलेटेड you can do my assignments, whatever assignment I have, I mean in SQL point of view, you can do my assignments for SQL basis। ठीक है, और बेटर
go in this Kaggle and download a data set. Download and data set, create some questions from your own side, or just search the interview questions and practice it on daily basis. ठीक है, practice it on daily basis. Or you can do one thing, just take the basic topics and use the same topics. I mean, create question from your own side, and make the same questions using the Kaggle dataset. What will happen, your basic topics will get refreshed every day. ठीक है, that is what I'm saying. ठीक है, download a data set, or you can just go and check out my projects. In my project I have all the data set. ठीक है, you can download that, all the data set is there, and you can create your own questions, or you can check out the interview questions, and you can practice that question from dataset on a daily basis. ठीक है, daily basis, at least your basic knowledge will be refreshed each and every day. ठीक है, at least it will happen. या तो I have my assignment, you can, but the thing is assignment is specially for SQL. हाँ, if you can use this assignment for Python, good to go. You can, if you can use the same assignment for Python, that is also good to go. At least for SQL, from basics to advanced, all the things will be covered. ठीक है, for Python you can use it your wish. You can use your Python logic and I mean skills and all in the same questions. ठीक है, or otherwise you can create your own data set, or you can download my data sets as per projects, and you can use it for your practice, your wish. ठीक है, ओके, वी हैव 3 क्वेरीज. हाँ, रेंडर है, बट रेंडर फ्री में कोल्ड स्टार्ट होता है एपीआई. ओके, रेंडर है, अभी भी चल रहा है क्या? लाइक आई डोंट नो इफ इट इज वर्किंग राइट नाउ और नॉट. इफ इट इज वर्किंग देन यूज इट. अब पता नहीं वो फ्री है कि पेड है, जस्ट चेक दैट. वो फ्री है कि पेड है, जस्ट चेक दैट. बट इतना तो था, हम लोग का जीमेल आईडी वगैरह तो उसमें कनेक्ट करके काम करता था. आई मीन कॉलेज वाला जीमेल आईडी, कॉलेज आईडी बोल दो, कॉलेज मेल आईडी. तो इफ़ इट इज़ फ्री, अब यू कैन यूज़ इट अगर है अभी भी, क्योंकि मैं चेक नहीं किया हूँ फिलहाल के लिए. तो एक बार आप चेक करो एंड सी इफ इट इज़ फ्री, देन या गुड टू गो. राइट, सो दैट्स द थिंग. ठीक है, एक बार चेक करो एंड यू विल बी एबल टू यूज़ इट. इफ़ इट इज़ फॉर फ्री तो आप अपने ऐप के लिए यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल नो इश्यूज़ फॉर दैट.
ठीक है. Okay, so it's 10 o'clock right now. Let's close my live stream. And thank you everyone for joining my live stream. Let's meet again in a new live stream tomorrow. So, till then, bye bye, take care, happy coding, happy learning, and good night. Let's meet tomorrow again in the new live stream. Chalo, bye bye.